The Himalayan mountains, basically we can say that these Himalayas, they are basically having stretched over India's northern boundary. So it is making the northernmost boundary of India, and these mountains run from west to east, right? Or we can say from the river Indus to Brahmaputra. And basically, students, we can say that these Himalayas, they are young fold mountains, or we can say they are the loftiest and one of the rugged mountain barriers of the world. Now see students, I have said these are young fold mountains. These are young fold mountains. Young fold mountains means, as I told you, that this is basically the result of convergent boundaries. जब ये दो प्लेट एक दूसरे की तरफ मूव करके आ रही हैं तो उसकी वजह से ये हिमालयाज क्या हो रहे हैं, ये ऊपर उठ रहे हैं, और उसका ये रिजल्ट है. दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल देम यंग फोल्ड माउंटेन्स. और इनकी हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है. लॉफ्टिएस्ट माउंटेन हम इनको क्यों बोलते हैं? लॉफ्टिएस्ट माउंटेन हम इनको इसलिए बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लॉफ्टिएस्ट माउंटेन्स हम इसलिए बोलते हैं कि इस हिमालयन रीजन के अंदर वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स भी अवेलेबल हैं. तो वर्ल्ड की अप्रोक्सीमेटली 50 हाईएस्ट पीक्स हमारे हिमालयाज के अंदर अवेलेबल है. So students, means Himalayas, as we can say that, means in upper part basically we can say, means in this manner we can say that means in northern part we are having basically Himalayas. So Himalayas means they are basically, we can say that, means running from here, means they in this manner they are moving towards the eastern side, right? So from we can easily say that from west to east, these Himalayas are basically having their direction, and from west to east the length of these Himalayas, that we can say that is 2400 kilometers, right? From west to east they are basically, we can say 2400 kilometers, and they vary in width. means width, यहाँ पर Himalayas की width अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से है. तो हम कह सकते हैं कि जो वेस्टर्न हिमालयाज हैं, ये वेस्टर्न हिमालयाज की विड्थ हमारी अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर्स के आसपास है. और जैसे जैसे हम ईस्ट साइड में मूव करते हैं, इनकी विड्थ यहाँ पर 150 किलोमीटर के आसपास हो जाती है. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि हिमालयाज की जो लेंथ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ डिक्रीज होती जाती है. So we can say that width vary from Kashmir to Arunachal Pradesh, right? The next we can say, students, in this part basically we can say that in terms of longitudinal extent, these Himalayas, they are basically divided in 3 regions, or we can say in 3 parallel ranges. तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये हिमालयाज की width डिक्रीज होती है ईस्ट साइड में, वेस्ट से ईस्ट साइड में डिक्रीज होती है, और वेस्ट से ईस्ट तक इसका जो पूरा कंप्लीट लेंथ है वो 2400 किलोमीटर्स है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हम कहेंगे, आप अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, longitudinal extent of Himalayas. As I said that we have divided in 3 divisions अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड्स. बट अभी मैंने जिस तरीके से ये ड्रॉ किए थे लास्ट स्लाइड में, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप कहोगे कि ये तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है हिमालयाज का, बट हाउ वी कैन डिवाइड दिस हिमालयाज इन लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. सो स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूड्स बेसिकली दे आर वर्टिकल, मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव डिवाइडेड दिस हिमालयाज. So according to longitude we have divided these Himalayas into 3 categories. Basically means latitude in the sense when we move from south towards North India. So according to that means we have basically 3 divisions. So first, second and third means 3 divisions we are having. The uppermost part of these Himalayas, that is basically we used to call greater, or we can say great Himalayas. So the first one, that is the great Himalayas. The second one, that great Himalayas, they are also called Himadri. We can also call Kashmir or Himachal Himalayas, right? So great Himalayas, they are basically also called inner Himalayas. Now why we are calling inner Himalayas? जैसे घर के अंदर का जो गेट होता है, तो अंदर in the sense it is making the boundary. So from here we are moving towards north part.
तो जो अंदर का पार्ट है वो इनर हिमालय है। और इनर हिमालयाज बेसिकली ये जब प्लेट्स की मूवमेंट हुई तो इनर हिमालयाज पहले बने एज कंपेयर टू आउटर हिमालयाज। सो ग्रेट हिमालयाज दे आर ऑल्सो कॉल्ड हिमाद्री, दे आर ऑल्सो कॉल्ड आउटर हिमालयाज, एंड द एवरेज एलिवेशन ऑफ दीज ग्रेट हिमालयाज इज 6000 मीटर्स। मतलब इन हिमालयाज की, ग्रेट हिमालयाज की जो हाइट है वो एवरेज हाइट हमारी 6000 मीटर से, हम कह सकते हैं कि इनकी मेन सी लेवल से हाइट 6 किलोमीटर ऊपर तक है। जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक्स हैं वो इस ग्रेट हिमालयाज के अंदर आती हैं, या तो यहाँ आती हैं या फिर हमारे दूसरे रीजन के अंदर आती हैं। तो ग्रेट हिमालयाज के अंदर बेसिकली वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक्स आती हैं। तो ग्रेट हिमालयाज they are made up of granite and asymmetrical in nature. Means granite and asymmetrical in nature. Why we are calling it asymmetrical? Because यहाँ पर ये जैसे जैसे ये हम आउटर हिमालयाज की तरफ आते हैं, जैसे जैसे हम इनर हिमालयाज से, जैसे हम ग्रेटर हिमालयाज से इनर हिमालयाज की तरफ आते हैं तो इनकी हाइट डिक्रीज होती जाती है। तो इनकी हाइट डिक्रीज होती जाएगी तो ये एसिमेट्रिकल मींस ये यहाँ पे ग्रेनाइट से बने। ग्रेनाइट सबसे हार्ड पत्थर होता है हमारा, तो ग्रेनाइट से ये बने मींस कुछ अंदर वाला पार्ट इनका ग्रेनाइट से, बट अपर वाला पार्ट यहाँ पर हम कह सकते हैं ग्लेशियर्स या फिर स्नो कवर्ड है कंप्लीटली। तो एसिमेट्रिकल मींस यहाँ पे टेबल लैंड टाइप में जनरेट होते हैं, दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू कॉल इट एसिमेट्रिकल, राइट। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द ग्रेट Himalayas. Now second division which we are having, that second division of Himalayas we are having, that is we can say lesser Himalayas, or we can say Himachal Himalayas, or we can also call it middle Himalayas. So we can say they are basically lies mainly between the Shivaliks, or we can say outer Himalayas, or we can say between inner Himalayas. So lesser Himalaya we can call it, Himachal we can call it, and locally it is known as धौलाधर इन हिमाचल प्रदेश। इसको लोकली हम हिमाचल प्रदेश में धौलाधर बोलते हैं और इसको उत्तराखंड में हम नागटीबा बोलते हैं। सो मीन्स हियर वी कैन से the middle Himalayas, they are basically the middle part between Shivaliks, or we can say between outer Himalayas or inner Himalayas. So means that was basically the second division. So we can say, if we talk about the altitude of middle Himalayas, or we can say lesser Himalayas, or we can say Himachal or Uttarakhand Himalayas. So basically we can say the altitude or elevation means greater Himalayas, they were having elevation that was basically we can say 6000 meters, but the altitude means height of lesser Himalayas, or we can say middle Himalayas, that is basically ranges between 3700 to 4500 meters, but the width is about 50 kilometers. But the width of greater Himalayas is too high as compared to lesser Himalayas, or we can say as compared to middle Himalayas. So the average width of these lesser Himalayas is 50 kilometers, but the altitude is 37 to 4500 meters. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये इनका ऑल्टीट्यूड ग्रेटर हिमालय से कम है और इनकी जो विड्थ है वो भी ग्रेट हिमालय से कम है. So it includes basically several ranges like Pir Panjal range. It is the longest and we can say the highest range of lesser or we can say middle Himalayas. Dhauladhar, Mahabharat, means we can say that these are important ranges which basically lies in lesser Himalayas. And Pir Panjal range forms the longest and most important range. Range का मतलब है कि ये किसी ना किसी सीरीज में चल रहे हैं. तो ये सीरीज में जब चल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि पीर पंजाल सबसे ज्यादा सीरीज में चलता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट या फिर सबसे बड़ी सीरीज बनाता है. सीरीज मतलब ये कहीं ना कहीं इस तरीके से यहाँ पे सीरीज जनरेट करेगी, ये कहीं ना कहीं इस तरीके से यहाँ पे सीरीज जनरेट करेंगे. तो हम कह सकते हैं पीर पंजाल रेंजेस दे फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द इम्पॉर्टेंट रेंजेस in lesser Himalayas. Now the third portion which we are having, or the third part or the third longitudinal extent of Himalayas which we are having, that is Shivaliks. And Shivaliks, they are basically also called outermost range of Himalayas. And these Shivaliks basically we are having the average elevation
that they are having, that is basically we can say 900 to 1100 meters. तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एलिवेशन ग्रेट हिमालयाज की 6000 मीटर्स, और फिर उसके बाद लेसर हिमालय या फिर हम कह सकते हैं मिडल हिमालय जिसकी एलिवेशन थी 3700 टू 4500, और थर्ड जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है वो है हमारी सिवालिक्स जो कितनी है 900 से 1100 मीटर्स तक है। और अगर यहाँ पे हम विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ देखो आपकी ग्रेटर हिमालय से और इनर हिमालय से जब हम आउटर हिमालय की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये विड्थ डिक्रीज होती जा रही है। एंड सिवालिक्स बेसिकली वी कैन से दैट इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ इरोडेड मटेरियल और वी कैन से द रिजल्ट ऑफ बोल्डर्स एंड ऑल। सो इट इज बेसिकली द लो लाइंग एरिया of Himalayas. So the width of Siwaliks is basically ranging from 10 to 50 kilometers. Now see, in Siwaliks we are having availability of dunes. So dunes basically we can say we can define that they are basically the longitudinal valleys which mainly lies between Siwaliks and lesser Himalayas. And some of the important dunes we are having in Siwaliks that we can say Dehradun, Kotli Dun, Dehradun, Kotli Dun, or we can say Patli Dun. They are the important we can say dunes in India which are basically available in Shivalik regions. Dunes देखो जब ये basically lesser Himalayas और शिवालिक के बीच में अवेलेबल है, मतलब ये longitudinal valleys हैं. Longitudinal valleys आप कैसे बोलोगे, इस तरीके से अवेलेबल हैं ये. तो lesser हिमालय और बीच में साइड में आपका शिवालिक्स, और इनके बीच में जो एरिया है वो आपके कौन से ड्यून्स हैं. So these dunes they are also very important. So important dunes in India which we are having, they are Dehradun, Kotli Dun and Patli Dun, right? So this was basically the longitudinal extent of Himalayas. Now we have divided Himalayas, means we have divided Himalayas according to we can say the river regions, or we can say from west to east. But before starting this division from west to east, again we can check it in the map. Means these Himalayas, as we discussed here, we can say that greater Himalayas we are having in the upper portion, right? Here we are having great Himalayas. Then see, it is the region of Shivaliks, and between Shivaliks and greater Himalayas, means this is basically we can call great Himalayas, this is Shivalik. If it is not visible we can check it from here, and here we are having lesser Himalayas. So great Himalayas, Himadris, or we can say inner Himalayas, lesser Himalayas, middle Himalayas, or we can say Himachal Himalayas, or we can say Shivaliks और आउटर मोस्ट हिमालयास. अब आप यहाँ से हम एनालाइज कर सकते हैं कि ग्रेट हिमालयास के अंदर आप देखिए माउंट कैलाश इधर है आपका, इधर आप देखोगे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक्स में से आती हैं. या फिर अगर आप बात करो यहाँ पे तो यहाँ K2 बेसिकली ये काराकोरम रेंज में चला जाता है. सो ग्रेट हिमालयास इट बेसिकली वी आर हैविंग द वर्ल्ड्स वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स वी आर हैविंग इन द रीजन ऑफ ग्रेट हिमालयास. और उसके बाद में हमारा इनर हिमालय है जिसमें आपका पीर पंजाल और ये सब धौलाधर रेंजेस, ये सारी आपकी लेसर हिमालयास के अंदर आ जाती हैं, और नीचे आपका आ जाता है शिवालिक्स, राइट. सो ये हमारा कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है. इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है. अब हम हिमालयाज की जो डिवीजन करेंगे वो डिवीजन हम करेंगे हिमालयाज की वेस्ट से ईस्ट की तरफ. वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर हम डिवीजन करते हैं हिमालयाज की, सो बेसिकली वी कैन से दैट हिमालयन रीजन्स, दीज हिमालयन रीजन्स बेसिकली लाइज फ्रॉम इंडस टू सतलुज. देखिए आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर दिस इज बेसिकली वी कैन से दैट वी आर हैविंग इंडस रिवर हियर, राइट. इंडस रिवर वी आर हैविंग. सो फ्रॉम Indus to Brahmaputra here, means in this part we are having Brahmaputra. So from Indus to Brahmaputra we have divided these Himalayas in several divisions. Like from Indus to Satluj we can call we are having Punjab Himalayas. From Indus to we can say Kali we are having we can say that Central Himalayas. Then we are having means after Kali to means Tista we have divided the various divisions. So according to that means we can say from west to east we have divided the Himalayas, right. So Punjab Himalayas, but it is also known as Kashmir and Himachal Himalayas from west to east. Then we can say that we are having Kumaon Himalayas between Satluj to Kali river, right. So we can say that means Kashmir or Himachal Himalayas, they are basically between we can say Indus to Satluj. Then Kumaon Himalayas we are having from Satluj to Kali river.
Then we are having Nepal Himalayas. Nepal Himalayas, they are basically from Kali to Tista. Then we are having Assam Himalayas. So these are the four main divisions from west to east. But one more division we are having, which we used to call Purvanchal, which we also used to call northeastern Himalayas. So these are basically five major divisions of Himalayas on the basis of, or we can say, regions from west to east, right? So Himalayas, we can say that they curve sharply to the south beyond the Dihang Gorge, means when Brahmaputra river enters from there, we can say they are sharply beyond the Dihang Gorge and spread along India's eastern border, which is basically we used to call Purvanchal, in, or we can say eastern hills and mountains. Purvanchal, basically we can say it is basically we can call like from north to south, whatever divisions we are having, means this type of hilly region we are having. So Purvanchal, basically we can say it from Dihang region towards eastern side we are having Purvanchal. So here we are having Patkai hills. Patkai hills we are having. Then we can say in Nagaland, Naga hills we are having, because the extension of means we can say Purvanchal is from north to south. So directly we can say that from north to south, means in this direction we can say we are having Purvanchals, or we can say eastern hills, or we can say mountains or eastern mountains. So Patkai hills, Naga hills, Manipur hills we are having, right? Manipur will, then at the end we are having Mizoram, so Mizo hills we are having. So these hilly regions, they are basically the part of Purvanchal, right? So from west to east, means we can say we have divided these Himalayas in several regions, like we can say in the first region, which has been divided as Punjab Himalayas, or we can call Kashmir and Himachal Himalayas. So that is basically divided from Indus to Satluj. Then Satluj to Kali, we have divided Kumaon region, or we can say Kumaon Himalayas. Then Kali to Tista, we have divided that, basically we can also call that Darjeeling Himalayas, or we can also call that Nepal Himalayas. Then Tista to Rihang, we are basically having Assam Himalayas, or we can say Arunachal Himalayas, right? So these are basically subdivisions of Himalayas from west to east. I hope students now you have understand about the Himalayas, right? The subdivisions of Himalayas means basic five major subdivisions of Himalayas we are having. The first, that we can say Kashmir, northwestern Himalayas, that basically lies between, we can say, from Indus to Satluj river. Then we are having Himachal, or we can say Uttarakhand Himalayas, that basically lies from Satluj to Kali river. Then we are having Darjeeling or Sikkim Himalayas, which we can also called Nepal Himalayas, that basically we can say from Kali to Tista river. Then we are having Arunachal Himalayas. The Arunachal Himalayas, basically we are having from Tista to Dihang river. Then we can say at the end we are having eastern hills and mountains. And eastern hills and mountains, they are basically having, means extension from north to south. So north to south means in northern part we are having Patkai hills. Then below Patkai hills we are having basically we can say Naga hills, then Manipur hills, then Mizo hills. So we can say that these four major hilly regions of northeastern part, means easternmost part of India, they are basically the part of eastern hills and mountains, which are basically we can call Purvanchal. So Himalayas, they have been divided in various regions, means according to longitude we have three divisions: Great Himalayas, or you can call inner Himalayas, or we can also call them Himadri. Then we are having means lesser Himalayas or middle Himalayas we can call. Then we are having Shivaliks, that is basically longitudinal extent of Himalayas. Then we can say west to east divisions, which I told you earlier. So this was all about the Himalayas. Now the next physical feature of India that we are having, that is